Dr. Weinbaum, welcome to View 360. Considering what President Trump outlined last year when he gave his Afghanistan policy, does it look like America has achieved the goals that it wanted to, needed to? Is this the right time to change the policies? Well, of course, this is a matter of great debate here. Remember back when, in that August 2 years ago, when he announced his policy, he said it would be condition-based. Right. Some people took that as an indefinite commitment. I know it should have been read as when I decide the conditions are correct, I'll leave. And certainly was not a commitment for the long term necessarily. All right. So डॉक्टर मार्विन वाइनबाउम कहते हैं कि जिस पॉलिसी खिताब का भी हमने भी जिक्र किया, जिसके कुछ टुकड़े आपको सुनवाए भी इस प्रोग्राम में, अभी हमने जब सदर ने वो तकरीर की थी तो बहुत से लोगों ने उससे ये मानी अख्स किया था कि इसका मतलब ये है कि अमेरिका गैर मुय्यना मुद्दत तक अफगानिस्तान में रहेगा, क्योंकि बात कंडीशंस बेस्ड इनखला की हुई, ना कि किसी टाइम टेबल पर बेस्ड की। लेकिन डॉक्टर मार्विन वाइनबाउम कहते हैं कि वो जो नतीजा अख्स किया गया था वो ज़रूरी नहीं कि वो दुरुस्त भी था। But Dr. Weinbaum, the other question is, President Trump in that speech also said that, you know, there should be some kind of a settlement which is sort of in line with, it pays an homage to the contributions and the sacrifices America had made. Now, when we talk about any kind of negotiated settlement in Afghanistan, President Trump has also not shown in the past a lot of faith in those negotiations. On Veterans Day, he said these talks were in strong negotiations, but they may or may not work, and eventually said they may not work. Why? Why has he not even had much faith in these talks? What does that mean to us in Washington? Well, I think he is banking on these talks as a way of justifying what he has wanted to do for some time, and that is have a smaller footprint in Afghanistan. If those talks are in any way to result in a beginning of discussions, he will use that certainly. And if Ambassador Khalilzad comes back empty-handed, then he will also use that as justification to do what he really wanted to do in the first place, and that is not to send additional troops when he made that announcement. All right. So I think that he has it either way. All right. So Marvin Weinbaum कहते हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप का इन्हिसार इन मुज़ाकरात पर ही है और इसी की रोशनी में वो फौजियों की जो वहाँ पे तादाद है उसका फैसला करेंगे, क्योंकि वो हमेशा से ये चाहते थे कि वो इजाफी फौजी जो हैं 3000 तक की इजाफी फौजियों की बात की जा रही थी, वो इजाफी फौजी वो अफगानिस्तान ना भेजें। और अगर एम्बेसडर ज़ुल्फ़ी खलीलज़ाद जो उसका खसूसी मंदूब है अमेरिका के अफगान अमल के हवाले से, अगर वो भी खाली हाथ वापस लौटते हैं तो फिर उसी को सदर ट्रंप बुनियाद बना के अफगानिस्तान के साथ जो फ्यूचर एंगेजमेंट है उसका तयन करेंगे। बट डॉक्टर वाइनबाउम, द क्वेश्चन अगेन, दिस क्वेश्चन अराइजेस दैट इफ at this point, America talks about a huge possible reduction in its troops, something that the Taliban have constantly been asking for. Is this going to strengthen American position in the talks, or is this going to give the Taliban an additional reason to not really have too much to give in these talks? Well, I think that you've put your hand on the problem here. By announcing, and I should mention that there is no schedule for this reduction, but by announcing it, he's already given away to the Taliban a major concession without getting anything in return. This, I think, certainly does not further, I believe, the process here. The Taliban have never budged from their basic demands, while the United States and the Kabul government is trying to show flexibility. And what they have done instead of progressing the talks is they've shown just how desperate they are to get any kind of process going. All right. So Dr. Weinbaum कहते हैं कि अमेरिका और अफगानिस्तान अपनी तरफ से तो कह लीजिए कि खास तौर पे अमेरिका इस सिचुएशन में फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना चाहता था, लेकिन इस तरह की बात करके एक डेस्परेशन का तासुर मिलता है। और दूसरी तरफ ये कि सदर ने कम से कम कोई स्केड्यूल अभी तक व्हाइट हाउस की जानिब से सामने नहीं आया ट्रूप्स की तादाद में कमी किसी किस्म की करने का, लेकिन डॉक्टर वाइनबाउम का कहना है कि तालिबान को एक बहुत बड़ी कंसेशन इससे मिलती है और बदले में तालिबान से अब तक कुछ ऐसी बड़ी चीज़ नहीं ली गई। डॉक्टर वाइनबाउम,
at this point, I'm going to have to switch gears just because of what is happening in Pakistan. Again, a big day of turmoil in Pakistan. Three-time Prime Minister Nawaz Sharif once again jailed for 7 years in one NAB reference, but acquitted in another. Sitting in Washington, when you see this kind of a political scenario shaping up in Pakistan, what does this say about Pakistan? Well, unfortunately, it sends the wrong message that Pakistan's political turmoil, which seemed to have lessened, is now again going to be at the forefront, comes at a very difficult time for Pakistan when it is facing its major economic problems and is trying to convince the United States and others that it is doing everything possible to deal with the terrorism issue, particularly as it regards to Afghanistan. राइट, डॉक्टर वाइनबाम कहते हैं कि आज के दिन में जो पाकिस्तान में हो रहा है उससे बाहर की दुनिया को अच्छा पैगाम नहीं मिलता, एक गलत तासुर मिलता पाकिस्तान के बारे में कि जो सियासी हलचल थी, जो उतार चढ़ाव था, वो उम्मीद थी, सूरत हाल ये नज़र आ रही थी कि वो अब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन एक दफ़ा फिर वो बढ़ गई और पाकिस्तान बकौल डॉक्टर वाइनबाम मुश्किल हालात से इस वक्त गुजर रहा है और अमेरिका को और दीगर दुनिया को तो ये दिखाना चाह रहा है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस इकदाम उठा रहा है, लेकिन मुल्क के अंदर जिस किस्म की हलचल चल रही है वो इन गोल से नज़र हटा भी सकती है. डॉक्टर वाइनबाम, वी रियली अप्रिशिएट योर टाइम एंड योर इनसाइट. थैंक यू वेरी मच. My pleasure.